Hello everyone, welcome back to Sports Khabri and Curious Harry. I know I was a little late, but Shane's not going to be joining us today because it's his birthday and he deserves a day off on his birthday. Of course, Hiren, crazy game. Kerala Blasters beating Odisha, edging the game 2-1. They were 1-0 down in the first half. It looked like Odisha were the better side in the first half. They could have made it 2. Diego Mauricio's missed penalty. But in the second half, they turned it around. Quick free kick, something that Kerala Blasters are used to. Been on the receiving end of it. Now they're on the right side of the result. So that, and then of course that beautiful finish from Adrian Luna in the end. What do you make of the game today? Crazy game. Crazy, entertaining game. I think the full pace also. Atmosphere has been absolutely brilliant. And I think first half में भी आप देखिए नो डाउट दो चांस यहाँ पे ओडिशा ने जरूर बनाए. एक जो पेनल्टी वो जो नाउचो ने क्या किया मतलब हैंड ऑफ गॉड कर दिया, क्या कर दिया पता ही नहीं चला That's उसका. a red card, एंड right? For हाँ me that वो was a रेड red कार्ड card. होना चाहिए था. Red card, हाँ, ये exactly. येलो येलो कार्ड दिया. सॉरी. तो वो वाली चीज थी. लेकिन आप देखिए फर्स्ट हाफ में मेरे को लगा कि केरला ब्लास्टर थ्रू आउट द गेम मेरे को ज्यादा डोमिनेंट और कह सकते कि मोर कंट्रोल साइड लगी कंपेयर टू Okay. ओडिशा एफसी. Okay. जो जनरली हम सर्जियो लोवेरा से देखते नहीं है कि उनकी साइड आप देखिए आप देखिए पोजीशन भी आप देखिए दोनों ने आई थिंक 50-50% रखा है. नहीं तो जनरली आप सर्जियो लोवेरा की साइड से देखेंगे कि वो पासिंग के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं. लेकिन आज थोड़ा सा वो मेरे को लगता है कि सीट बैक होके खेल रहे थे या फिर काउंटर पे ज्यादा खेलने की कोशिश कर रहे थे और चाहते थे कि भाई केरला ब्लास्टर बॉल ज्यादा रखे और उनके पास से बॉल विन करके फिर आप देखिए गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी करे. फर्स्ट गोल जो उन्होंने कंसीडर किया आई थिंक हॉर्मी पाम फिजिकली आई थिंक आउट क्लास बाय डियोगो मरिशो. एंड डियोगो मरिशो क्या मतलब आई थिंक वन ऑफ द लीथल स्ट्राइकर ऑफ द आईएसएल टू बी ऑनेस्ट. जिस तरह से वो Some of जिस the एंगल runs. से जिस पोजीशन हाँ अब उसका शॉट आप देख लीजिए जब भी वो लेता है ऐसा कोई भी कीपर वो बीट कर देता है. एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ ब्राजीलियन एंड दैट्स अ ब्रिलियंट फिनिश. उसके उसके अलावा आई थिंक जो फर्स्ट हाफ में 10th मिनट पे राहुल केपी ने एक शॉट लिया था एंड आई थिंक Right in front of the goal. जेरी का वो काफी क्रुशियल वो क्या बोलते हैं कि टच आ गया अदरवाइज देयर शुड बी अ गोल विदाउट अ डाउट. एक और चांस आई थिंक फर्स्ट हाफ में बना था फॉर केरला ब्लास्टर. मेरे आई थिंक ओवरऑल अ वेरी एंटरटेनिंग गेम टू बी ऑनेस्ट. एंड एड्रियन लूना व्हाट अ प्लेयर. आई थिंक विदाउट आई थिंक लेजेंड ऑफ द आईएसएल एंड लेजेंड फॉर द केरला ब्लास्टर विदाउट डाउट. मतलब आई थिंक अगर वो नहीं होते तो आई डोंट सी कि भाई केरला ब्लास्टर क्योंकि सिर्फ आप ऑफेंसिव नहीं आज आई थिंक द सेकंड मोस्ट उनके टैकल्स पे है. सो डिफेंसिवली आप हमने देखा कि ही हैज बीन एवरीवेयर एंड दैट शोज कि व्हाट क्वालिटी ही ब्रिंग्स एंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम. Yeah, true. That's so true. I think Adrian Luna brilliant defensively, like Hiren just mentioned, coming back, tracking back whenever he's got the chance. Raider, I completely agree with you. Actually, age cashing over Jahu potentially, yes, he looked a little off it at times. Constantly bittering with and chattering with Amrinder as well. I think the goalkeeper was right many times. I think he was telling him, I have to clear it. Jahu wanted him to play it short, play it out of the back, but sometimes it was just not on, and I would have backed the keeper. Uh, what do you make of Jahu today, Hiren? Because to me today he looked off it, and a lot of missed passes from his well. 100% he looks off and this is the bad game for him. फर्स्ट हाफ में दो बार आई थिंक मैंने नोटिस किया कि एड्रियन लूना ने उनसे बॉल छीन लिया था ओपन पोजीशन से. एंड ही लुक्स लिटिल बिट स्लो टू बी ऑनेस्ट. एंड आज आई थिंक सेकंड हाफ में भी उन्होंने गलतियां की है. जो फर्स्ट हाफ में दोनों बार बॉल छीना था उसमें से आप देखिए चांसेस भी बने थे केरला ब्लास्टर के लिए. सो डेफिनेटली दैट्स अ कंसर्निंग थिंग क्योंकि आपका डिफेंसिव मिडफील्डर के ऊपर आपका सर्जियो लोवेरा की जो प्लेइंग स्टाइल है उसमें उसका काफी क्रूशियल रोल रहता है. और बिल्कुल फर्स्ट हाफ में भी आई थिंक अमरिंदर के साथ वो एक अंडरस्टैंडिंग में गलती हुई थी. आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखिए ओडिशा एफसी की बीट्स एंड पीसेस में डिफेंसिव परफॉर्मेंस अच्छी रही है थ्रू आउट द मैच. काफी बार उन्होंने गलती भी की है. एमी रेनेवेडे कभी कभी अच्छे दिखे, कभी उन्होंने भी मिस्टेक की है. जेरी ने भी कभी अच्छा क्लियरेंस किया, कभी मिस्टेक की है. मुर्तजा फॉल भी लुक डिसेंट. नरेंद्र गहलोत भी डिसेंट लगे. उसके बाद जो डेलगाडो आए उसके बाद भी मेरे को मतलब उतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगे. सो डिफेंसिवली ओडिशा एफसी नीड्स टू सॉर्ट आउट देयर थिंग्स बिकॉज काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की एक तो मेरे को कमी दिख रही है. जो कीपर बैकलाइन है आपका डिफेंसिव मिडफील्डर है जो होनी चाहिए आई थिंक वो नहीं दिख रही है. एंड डेफिनेटली एमएस राव आई थिंक थोड़े से स्लो हो चुके हैं. एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन मे बी व्हाई मुंबई सिटी लेट क्या बोलते हैं लेट हिम गो. Yeah, आई yeah, थिंक yeah. कि दे वांट Potentially, ट्रांजिशन एंड yeah. पोटेंशियली आई थिंक दैट्स द वन ऑफ द रीजन. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि वो अपने इतने क्रूशियल प्लेयर को जाने देते. एंड एज कैचिंग अप फॉर ये 100%. Yeah, and one player who actually impressed me in Odisha today, apart from Maurizio, obviously, but he did miss the penalty, which takes a lot of points away. But Isak, oof, that first half.
he was on it. Hiren, what did you make of him? Because I thought he was brilliant in the first half. Absolutely, I think फ्रंट लाइन में डेफिनेटली इज दी मतलब गोडार्ड ने मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया बट आई थिंक इजाक हैज बीन ब्रिलियंट आई थिंक जिस तरह से उन्होंने आई थिंक पेनल्टीज में भी वही था रिबाउंड पे उसने शॉट लिया था शायद Yeah, इजाक yeah, ही था yeah. एंड Isaac. दैट्स आल्सो अनलकी लिटिल बिट बट आई थिंक एब्सोल्युटली अ प्रॉमिसिंग टैलेंट एंड लास्ट सीजन भी इजाक का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा रहा था एंड उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया इस सीजन सो दैट्स अ गुड पॉजिटिव साइन फॉर ओडिशा एफसी अनदर प्लेयर जो फ्रंट लाइन में मेरे को ऑफ लगे हुए है रोहित कृष्णा सेकंड हाफ में जब उसको एज अ सब्स्टिट्यूशन लाया गया आई डोंट सी कि उसका उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा सिवाय गोडार्ड भी मेरे को ऑफ कलर लगे सो फ्रंट लाइन में अभी भी आई थिंक मेरे को लगता है कि संजू लेवेरा नीड्स टू फाइंड अ बेटर मतलब जो डिएगो मॉरिसो को जिस तरह से सपोर्ट की जरूरत है आई थिंक उस तरह के अभी तक परफॉर्मेंस दूसरे प्लेयरों से नहीं आ रही सिवाय इजाक और उन सबको छोड़ के सो दैट्स द कंसर्निंग थिंग एक प्लेयर राहुल मेरे को बढ़िया लगे वो है सचिन सुरेश जो टुडे ही हैज बीन एज अ Yeah, गोलकीपर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी थी वो सेकंड गोल देखिए आप एड्रियन लूना का जिस तरह से उसने लेफ्ट बैक पे डिस्ट्रीब्यूट किया और वहां से फिर जो लेफ्ट बैक आई थिंक नाउचा सिंघी थे उन्होंने जिस तरह से क्रॉस बॉल डाला एंड आई थिंक एड्रियन लूना ने जिस तरह से फिनिश किया सचिन सुरेश भी मेरे को आज काफी बढ़िया दिखे फॉर दी केरला ब्लास्टर I agree. Of course, big point for Sachin is the penalty save as well. Double save because on the rebound, a lot of keepers, yeah, you make the first save and then the rebound you're switched off, but he was switched on for the rebound. लास्ट Makes a good save. लास्ट नाइट ही राहुल जमशेदपुर चिमाचुको ने ऐसे ही गोल स्कोर किया था ना रिबाउंड पे ही Exactly. So keepers have to be switched on for the rebound as well. So he was and he did exactly that. So hats off to him for doing that. Uh, Hiren, 2-1, of course, the crowd, the atmosphere has some part to play. The people, again, suggesting in the chat that did the crowd kind of push them over the line because it felt like they were giving them a lot of energy towards the end, towards after it was 1-1. आई थिंक 100% और उसका अगर आप स्टेट वाइज भी उठा के देख लीजिए जो केरला ब्लास्टर का होम पे परफॉर्मेंस है एंड जो अवे में परफॉर्मेंस है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है एंड दैट शोज कि भाई वो कितना ज्यादा क्राउड का वो एक क्या बोलते हैं कि उनकी जो मोटिवेशन या फिर जो भी उनको एक पम्प अप करने के लिए जो रोल होता है आई थिंक वो वहाँ पे Yeah. क्लियरली विजिबल है एंड आज भी जिस तरह का एटमोसफियर था मतलब क्रेजी एटमोसफियर टू बी ऑनेस्ट जिस तरह से वो वहाँ पे पेनल्टी सेव हुआ एंड उस टाइम पे जिस तरह से क्राउड का रिएक्शन था फिर जब पहला गोल हुआ सेकंड गोल आई थिंक it's a crazy atmosphere and any team in the world I think will definitely जो ओपोजिशन होंगी वो इससे मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट या फिर थोड़ा सा प्रेशर में तो आती है जिस तरह का यहाँ पे क्राउड का चेंटिंग सारी चीजें होती है आई थिंक डेफिनेटली दैट्स अ 12th मैन फॉर द केरला ब्लास्टर विदाउट अ डाउट 100%. But here there are some important talking points in this game. First, for me, is the handball. What did you make of it? Because for me, that's a clear red. That is a nailed down red. as per the book if you do that in the box then that's a red. Yeah. And it's That's a red. intentional. Outside, outside, it's intentional. It's an Yeah. intentional thing, and that should be a red card without a doubt. I think अगर आप outside भी box कर आपका handball लगता है इस तरह से intentionally तो आपको yellow card मिलता है. Box के अंदर तो that Exactly. should be a red card Yeah, red without a card. doubt. But And maybe I clear think because first half में था हाँ, तो that's why क्या बोलते हैं कि कीपर ने और सॉरी रेफरी ने वो किया हो. That's one of the reason. true, but I don't understand this because a lot of the times, like you said, I've seen a lot of referees bad tackles in the first half, probably first 10 minutes, first 15 minutes. They don't give cards. I don't. So for me, like this is how I look at it. If it's the first minute, doesn't matter. 90th minute. If it's a bad foul, it's a bad foul. Here, this was a blatant red card. It was a red card. It's a red card. So no, I understand what you're saying, but yeah, what do you do? हाँ आप देखिए लास्ट में भी जो क्या बोलते कि कलबरस को फ्री किक क्या बोलते वो मिला सॉरी कॉर्नर वो मतलब जो Yeah. दानिश फारूक किसने शॉट लिया था आई थिंक Farouk, left foot. फारूक ने शॉट लिया था एंड कहीं पे वो बॉल किसी ने छुआ नहीं था फिर भी उसको Corner. रेफरी तो ओवरऑल नीड से इंप्रूवमेंट उसके बारे में तो हमने Yeah, काफी बार yeah, बात कर चुके हैं एक that's मैं true. पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ राहुल इस इवान वुकोमानोविच Do you और जिस think तरह से उसका his टीफो भी defense? था Uh, आई थिंक जिस तरह से फ्रांस ने उसका रिसेप्शन किया है आई थिंक क्रेजी मतलब जो टीफो थे जिस तरह से मैच से स्टार्ट होने से पहले उन्होंने ग्राउंड में चक्कर मार के मतलब फैन को क्या बोलती कि ग्रीटिंग्स किया और जिस तरह से
I think it's a big boost for Kerala Blaster, to be honest. I think आपके head Yeah, coach का sideline पे होना, I think it's always give a boost to fans also, and also you can say key players. So yeah, definitely that's a big positive for them. yeah. But Hiren, this game could have gone very different. I saw Vukamanovich's face when the Odisha penalty was given. He didn't look very happy. He looked like probably that homecoming has turned kind of sour. But huge penalty save and again from the rebound. What do you make of that moment? Because do if Odisha score that, do you think the game is over? I think अगर वो 2-0 हो जाता, then it's a very very difficult for केरला ब्लास्टर टू क्या बोलते हैं कम बैक, क्योंकि आपको फिर वो एक जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि वो डाउन हो जाता है प्लेयरों का, एंड हाँ सामने वाली टीम और भी ज्यादा चढ़ के खेलती है. सो डेफिनेटली दैट्स द पॉइंट वेयर मेरे को लगा कि नहीं भाई केरला ब्लास्टर अभी भी गेम में उनका मतलब क्या बोलते हैं कि एक वो होप मिला है कि वी कैन कम बैक इन दिस मैच, एंड उन्होंने वही सेम एग्जैक्टली चीज की कि जो पेनल्टी से हुआ उसके बाद आप देखिए प्लेयरों ने कम गलतियां की, उससे पहले हॉर्वी पाम नावचा उससे कुछ एरर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए दे लुक मोर फोकस, एंड आई थिंक दैट्स गिव देम द क्या बोलते हैं होप कि भाई चलो हम इस मैच में कम बैक कर सकते Yeah, a lot of interesting comments. Full Indian backline for KBFC again in the absence of a lot of important players have done well. Joshua is pointing that out. Completely agree, Joshua. Sunil, guys, do please like the stream, share the stream. It's just going to help us grow. So please do that. Vukovic is overrated. MBSG will destroy Kela. I don't know about that, but I have my reservations about Vukovic. Not ever since that BFC incident has happened. I think he's for me in my eyes he's lost a lot of respect. But uh, it's good to see him back. Of course, it's good to see every manager be on the touchline, so that's a positive. Luna is of course the last important aspect that we'll talk about. But before that, Hiren, Kerala Blasters, the equalizer, quick free kick, the हैं. smarts being switched on, Odisha switched off. Who do you say that's good work from Kerala or defensive, uh, bad defensive displays from Odisha? I think Adrian Luna showed smartness there, and definitely he off guard उन्होंने कोट कर दिया ओडिशा एफसी को, आई थिंक उनके प्लेयरों को. आई थिंक दे शुड बी मोर फोकस ऑन दैट थिंग, बिकॉज आप बैक लाइन में आपका कोई प्लेयर वहां पे था नहीं. सो उससे उससे पहले आप देखिए दाइसुके ने एक अच्छा चांस वहां पे बना था, उन्होंने खुद शॉट लेने की कोशिश की थी, जबकि वहां पे अगर वो इजीली पास देते दीवान Yeah. चाकोस को, देन उससे पहले ही गोल हो जाता. लेकिन जैसे वो इंसिडेंट हुआ, एंड आई थिंक वेरी वेरी प्रोएक्टिवनेस फ्रॉम दी यू कैन से एड्रियन लूना, एंड आई थिंक मेरे को इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ओडिशा एफसी का जो डिफेंस एंड उनकी जो मिडफील्ड है उसका मेरे को आज कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा मतलब बेकार सा लगा. वो मतलब उस तरह से दिख ही नहीं रहे थे कि भाई एक दूसरे की मूवमेंट या फिर पासिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ भाई क्या करना है क्या सिचुएशन में. आई थिंक एवरीवन इज डूइंग इंडिविजुअल वर्क रादर देन एज अ टीम, जो एक आपको डिफेंस करना कलेक्टिवली डिफेंस करना चाहिए, वो नहीं हो रहा था मेरे हिसाब से ओडिशा एफसी के लिए, एंड दैट्स व्हाई दे कंसीडर दोस टू गोल्स. अदरवाइज आप देखिए मोर्तादा फॉल इज अ वेरी गुड डिफेंडर, डेलगाडो, नरेंद्र गहलोत, एमी रेने बड़े अच्छा कर रहे थे, जेरी अच्छा कर रहे थे, एम जाऊ जैसा प्लेयर, फिर भी आपने मतलब जिस तरह से गोल कंसीड किए हैं जहाँ पे आपकी इंडिविजुअल आपकी क्या बोलते हैं टीम ज्यादा मिस्टेक थी रादर देन अब बोलेंगे सामने वाली टीम से. सो डेफिनेटली दैट्स द थिंग जो उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 3 पॉइंट पोस्ट कर गई. Yeah, of course, fair enough. Guys, I don't hate Ivan Vukovic. It's just that I think it's not about Vukovic. I think it's anybody, any manager who would have done that, I think would have probably not gone right with a lot of fans, football fans in general. So, yeah. Isak was brilliant today. Yeah, we spoke about that, Lord Beke. I think he's been brilliant. Uh, Unlucky probably not to get a goal contribution. Did he? No, he didn't. So yeah. Now, finally, the last talking point is that finish from Luna. Brilliant finish here in because I've it's brilliant because outside the box and he's just perfectly curled it in. What do you make of that finish? Brilliant finish. क्रेजी क्रेजी मतलब डेफिनेटली इसीलिए मैंने बोला कि एड्रिन लूना इज द लेजेंड ऑफ द आईएसएल, नॉट ओनली फॉर द केरला ब्लास्टर बट फॉर द आईएसएल आल्सो इज द
क्या बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर वो प्लेड इन द आईएसएल फॉर मी, विदाउट अ डाउट। जिस तरह का इम्पैक्ट वो गेम में लाते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रहती है, जिस तरह के गोल स्कोर वो करते हैं, आई थिंक हर सीजन आपको ऐसे कोई मोमेंट, ऐसे गोल देखने को मिलते ही मिलते हैं एड्रियन लूना से। एंड दैट वाज एब्सोल्युटली, क्या मतलब, ब्रिलियंट ब्रिलियंट फिनिश। जिस तरह से अमरिंदर को बीट किया उन्होंने, देयर इज नथिंग अमरिंदर कैन डू, टू बी ऑनेस्ट। एंड Mhm. दैट्स अ क्रेजी गोल। बट आई थिंक वन प्लेयर आई वांट टू मेंशन इज क्वेमे पेपरे। वो मेरे मेरे को डिसअपॉइंट Mhm. किया है। आई थिंक अभी तक Yeah. उतना ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिया है उन्होंने। काफी ज्यादा चांसेस भी उनको मिले हैं इन द एब्सेंस ऑफ दिवांता कोस, बट he didn't able to, क्या बोलते कि, यूटिलाइज दैट। एंड आज भी दो तीन बार ऐसे बॉक्स में वो पोजीशन पे आए थे कि वहां पे he would should have make a better choice and pass to the other players who have available in the box, but he chose to take the shot, and both the times I think shot has been blocked. So Kwame Pepper needs to step up, for I Mhm. think for the Kerala Blaster. Otherwise, I think he will lose his place in the starting 11. Yeah, possibly. But Hiren, you mentioned this earlier, which is Adrian Luna tracking back his defensive work, which he's the main guy for Kerala Blasters, and I've seen this with a lot of clubs that the main guys sort of almost take it for granted sometimes that they don't do as much work as the rest, but Adrian Luna is always doing it. Uh, do you see that with other clubs that the main guys do so much work because he clearly works his socks off? I don't see any player in the other ISL clubs who have this type of work rate. अब देखिए प्रेसिंग भी वो Mhm. बंदा कर रहा है, वेमे पेपरे आपका स्ट्राइकर है, उसके बाद भी आप प्रेसिंग देखिए, वो बंदा आपका गोलकीपर को भी प्रेस कर रहा है, उनकी बैकलाइन को भी प्रेस Yeah. कर रहा है, अपने आप में जाके, क्या बोलते हैं, अपने बॉक्स में जाके वो क्लियरेंस दे रहा है। ही इज एवरीवेयर। अगर आप उनका हीट मैप देखेंगे तो पूरे पिच में वो मतलब है। एंड दैट शोज द कमिटमेंट वर्क रेट ऑफ एड्रियन लूना, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि इज द, क्या बोलते हैं कि, soul and heart and whatever you call it for the Kerala Blaster. Yeah. Without him, Yeah. I don't see Absolutely. Kerala Absolutely. Blaster Yeah. do anything, to be honest. Yeah, but that goal and the celebration and the fans, of course, it's a beautiful moment because he then runs over to the fans. It's crazy moment. I think whatever said and done, just the atmosphere and uh, in Kochi, it's just crazy and it's brilliant. And एक चीज तुमने नोटिस की, yeah, केरला ब्लास्टर ने जो फ्रेडी को एज ए सब्स्टिट्यूशन लाया, उसको फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था। आई थिंक मे बी उसको इंजरी, आई थिंक हुआ है, was बिकॉज potential. Yeah, सेकंड हाफ में वो आया था। सो दैट्स yeah, अ लिटिल बिट कंसर्निंग थिंग। विपिन ने भी आई थिंक एक चांस मिस किया सेकंड हाफ में, उसको अच्छा मिला था, विपिन मोहनन को भी। बट अदरवाइज ही लुक्स गुड। दानिश फारूक आई थिंक सेटलिंग डाउन वेरी वेल। राहुल केपीआर स्टार्ट करे थे, राहुल। yeah, yeah. So Do that's you the think he should impression have put to away that chance? Do you think he should be कौन सा? scoring that? The first one, 10th, 9th minute? आई थिंक उसकी ओर से सारी चीजें सही हुई थी। वो जो जेरी का Mhm. एंड वन पे क्लियरेंस आ गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक अदरवाइज इट वुड बी अ गोल विदाउट अ Yeah, डाउट। yeah, yeah, बट yeah. Yeah. Again, Kerala Blasters coming away with the result with injuries, like Mindset has pointed out. Huge win because we already spoke about the injury list at Kerala. Injury list, suspension list as well. No Prabir, no Drincic, Leskovic, the list goes on, Jackson. So, Hiren, how do you look at it? Because it's a huge win because they're missing so many players. And are you saying now Kerala Blasters are डेफिनेट surely top four? They should be fighting for the top four. आई थिंक डेफिनेटली आफ्टर द, मतलब आपकी फ्रंट लाइन में सारे प्लेयर फिट हो चुके हैं। डिफेंसिवली देयर इज अ कंसर्न विदाउट अ डाउट कि आपके दो तीन क्रूशियल प्लेयर नहीं है, लेस्कोविच नहीं है, द्रिंसिक आपने जैसे बोला, फिर आपका प्रबीर दास भी नहीं है। सो आई थिंक दैट्स द चैलेंज, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो उसको ओवरकम करने में भी पिछले दो मैच में आई थिंक सक्सेसफुल रहे हैं मेरे हिसाब से। सो दैट्स अ गुड पार्ट ऑन देम। एंड आई थिंक अवे का फॉर्म ही उसका ज्यादा कंसर्निंग है मेरे लिए। अगर इफ दे वांट टू बी इन टॉप फोर, I think they need to win some Mhm. matches in the away games. Otherwise, you can't be well in the top four. Simple as that. So I think that will be the deciding factor ki whether Kerala Blaster will finish in top four or not. Yeah, it's going to be very interesting because it looks like, I mean, they're doing everything right at home. It'll be interesting how they fare away from home. But again, given the injuries and all of that, it's just good that they've got to win and it just kind of boosts the morale everywhere for the team. And good stuff. So, Hiren, next up tomorrow, we've got
interesting Mumbai City FC versus Hyderabad. Your first reactions to this game? What are you expecting from this game? Hyderabad's rock Definitely, Mumbai bottom. City. Yes, they lose three matches, but all the three matches lose by I think one goal margin. So that's the only positive for them. Other than that, I think they need to step up. And अगर आप देखें गेम प्ले वाइज हैदराबाद लुक्स मतलब डिसेंट इनफ, इतना कुछ उन्होंने खराब भी नहीं किया, लेकिन दे जस्ट नीड टू क्लिक एज अ टीम, and Yeah, particularly a team like Mumbai City they are facing, so it's a big challenge now for them also definitely. एंड मुंबई सिटी के लिए भी यूएल वन नाइफ मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे कल। yeah, yeah, सो लेट्स सी विनीत राय को मौका मिलता है कि नहीं इन मिडफील्ड, वो देखना इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। क्या विपिन राय कंटिन्यू करते हैं या फिर से चांगते हैं विक्रम प्रताप देखने को मिलते हैं फ्रॉम मुंबई सिटी, दैट्स विल बी आल्सो इंटरेस्टिंग टू सी। एंड उनका नेक्स्ट मैच अभी अलीलाल के सामने भी आ रहा है, सो लेट्स सी स्क्वाड रोटेशन भी किस तरह से होता है। आई थिंक दैट्स बकिंगम आल्सो, वो भी उसको देखना पड़ेगा। So definitely Mumbai City is the favorite in this match, but Hyderabad has the मतलब आई थिंक की प्लेयर है उनके पास, इंडियन प्लेयर भी अगर आप देखें हितेश शर्मा है, आपके पास साहिल तोरा है, फिर बैकलाइन में साना सिंह है, निखिल पुजारी है, सो गुरमीत सिंह आपका गोलकीपर अच्छा है। सो देयर आर सम ऑफ द प्लेयर्स जो जो यहाँ पे मोहम्मद यासिर है आपके फ्रंट लाइन में, तो ऐसा नहीं कि yeah. इंडियन प्लेयर भी उनके पास अच्छे नहीं है। सो दे कैन हर्ट, बट एज अ टीम आई थिंक कलेक्टिवली अभी तक वो क्लिक नहीं हुआ है, सो दैट्स द ओनली ड्रॉबैक फॉर देम। Yeah, Hiren, your thoughts on this? यस, ग्रिफिथ का सस्पेंशन आया है, एंड मतलब ये क्या बोलते हैं कि आई थिंक फैंस की भी डिमांड थी कि उन्होंने चुप करने की कोशिश कर दी प्रवीण दास को। सो आई Mm-hmm. थिंक जो डिसिप्लिनरी कमिटी है उन्होंने फाइनली उसको नोटिस किया है, एंड Yeah, उसके चलते उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं सस्पेंशन दिया है। सो मोस्ट प्रोबेबली तीरी एंड मेहता विल स्टार्ट एज सेंटर बैक नाउ। yeah, yeah. I know what you're saying, Amal. Probably you feel that the one game suspension is a little less for him. It's a tough one because I've heard people saying it's okay, but to me it looked like you can't do that in a game. Although whatever Griffith's statement was on X and all of that, I still think it's not okay to go and hold the player like that. So it's good that there has been some action. Whether one or not is a different discussion. I think we were saying, Hiren, that day that even the Prabirda suspension, probably one match suspension would have served the purpose. But बट द रीजन फॉर but for प्रवीण दास सस्पेंशन इज the डिफरेंट। referee बट conduct, yeah, yeah, रेफरी में आपको दो से ज्यादा ही मिलता yeah, है, yeah, दैट्स द रूल। सो yeah, yeah. Fair enough. Fair enough. Yeah. So tomorrow, Mumbai City, is it a straightforward game for Mumbai, Hiren? Because they play at home. They're of course they're coming off a thrashing in the Champions League. But how do you see this going? I think that's the challenge for them in this season till now कि ट्रैवलिंग काफी ज्यादा हुआ है particularly for Mhm. them compared to other clubs, and that's the big challenge कि प्लेयर को रिकवरी होने में और सारी चीजों में टाइम लग रहा है। एंड थोड़ा सा वो भी आई थिंक इसीलिए मैं बोल रहा कि स्क्वाड रोटेशन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इतना ट्रैवलिंग करते हो, लगातार मैचेस खेल रहे हो। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब हो सकता है बिकॉज दे आर प्लेइंग एट होम, एंड लो कॉन्फिडेंस के साथ हैदराबाद आ रही है, सो मे बी 3-1 टाइप विक्ट्री आई एम सीइंग फ्रॉम मुंबई साइड। Okay, that's pretty comprehensive. Expectations from Hyderabad because again, they're of course they haven't won a game yet. They haven't even drawn a game yet. So how did they approach this? आई थिंक मतलब कौन क्या बोलते हैं कि नेशनल के लिए आई थिंक इट्स नाउ चैलेंज बिकॉज यू लूज 3 on a row, सो प्रेशर इज बिल्डिंग अप, एंड some of the Indian players managers bola has to step up, also foreigners Yeah. Peter Penanen, Victor, and I think backline में वो मैक्सिकन सेंटर बैक को लाया है जिनका लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस था मेरे हिसाब से। फ्रंट लाइन में आई थिंक जोनाथन मोया भी वापस आ चुके हैं, जो नोएल्स है आपके पास एज अ विंगर। सो दिस फॉरेनर्स नीड्स टू स्टेप अप, अभी तक वो दिखा नहीं है 3 मैचों में कि उन्होंने इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किसी की ओर से आया हो। सो आई थिंक अगर वो कर पाते हैं देन एंड देन दे हैव ओनली स्लाइटेस्ट चांस अगेंस्ट मुंबई सिटी, अदरवाइज आई थिंक दे डोंट स्टैंड अ चांस। Hiren, sorry, just coming back to this game because there's an interesting comment. Ishan Pandita starting ahead of Pepra. You've already spoken about Pepra and how he's not been effective. Do you think there's an opportunity to start Ishan Pandita ahead of him?
आई थिंक धीरे धीरे हो सकता है। ईशान पंडित अभी लगातार 2 मैच में कंटिन्यूसली एज सब्स्टिट्यूट आके खेले हैं। सो अगर वहां पे इंप्रूवमेंट दिखाते हैं देन डेफिनेटली ही कैन स्टार्ट विद दिमांता कोस एज ए टू नंबर नाइन्स जो इवान मुकोनविच जनरली खिलाते ही है। क्वेमे पेपरे देखिए आई थिंक डेफिनेटली डिसअपॉइंट मेरे को किया है, लेकिन स्टिल जो उसकी क्वालिटी है इज देयर। सो लेट्स सी क्या इवान मुकोनविच यहाँ पे डिसीजन बनाते हैं। बट ईशान पंडित को भी परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, मतलब जब भी उनको 10 15 20 मिनट खेलने को मिल रहा है तो वहां पे उसको इम्पैक्ट डालना पड़ेगा, तब जाके आप कोच को कन्विंस कर सकते हो कि व्हाई आई शुड स्टार्ट इन दिस स्टार्टिंग। Yeah, yeah. Amal, you're right. The I League starts tomorrow. We have a couple of games tomorrow. Real Kashmir, Rajasthan play the first one at 2. Then you go to Gokulam Interkashi later in the night. So couple of I League fixtures for tomorrow. That's there, and then you obviously got the ISL. You've got Mumbai City FC versus Hyderabad FC. Hiren, this is what the table looks like right now. It's pretty interesting because you've got Goa at the top after that draw against BFC. Then you've got the Blasters level on points, but they played one game more. Mohun Bagan have only played 3 games. So the top four is basically Goa, Blasters, Bagan, Northeast, and then yeah, like Mumbai City because they've again only played 3 games. Which side has impressed you the most so far? Definitely in the ISL, I think for me is definitely मोहन बगान is one of them, जिस तरह से उनका रन चल रहा है। मुंबई सिटी भी मेरे को उतना ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट नहीं किया आईएसएल में। नो डाउट आप उसका चैंपियंस लीग का परफॉर्मेंस बोल सकते हो। एफसी गोवा क्लचेस में जीत रही है, दैट्स आल्सो इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव साइड। नॉर्थ ईस्ट ने मेरे को मतलब काफी ज्यादा इन टर्म्स ऑफ द मेंटालिटी जो उन्होंने शो कर रहे हैं, I agree. स्टेप अप कर Yeah. रहे हैं ऑन दी ओकेजन्स, दैट शोज आपको चाहिए वो इस तरह के क्लच वाले मैचेस जीतने के लिए। सो ये कुछ टीमें जो मतलब काफी मेरे को बेटर लगी है और मजा आया है इनको देख के। True, true, true. I completely agree. I think my favorite team, like I said before, not my favorite team. My favorite team is BFC, but the team that's kind of impressed me the most has been FC Goa. But they looked a little flat against BFC. Again, that's probably because Noah wasn't there, no Brandon as well for them. Going to be interesting how this ISL shapes up because there are some teams that have played more, some teams that have played less. If you look at the lower end of the table, you've got BFC, Chennai, and what do you make of these teams? In Punjab, how does it look for पंजाब these? पंजाब ने देखिए गेम प्ले वाइज मेरे को इम्प्रेस इम्प्रेस किया। आई थिंक दे लुक्स very good in terms of the gameplay wise, but still they need a, you can say the front line has to Mehdi Tala, Juan Mera, Luka Madison, जो foreigners है, still they are not able to convert the chances into the goal, and अगर आप वो नहीं कर पाओगे then आप कितना भी अच्छा खेल लो आपको 3 पॉइंट नहीं मिलेंगे। डिफेंस आपको ड्रॉ दिला सकता है, 1 पॉइंट दिला सकता है, 3 पॉइंट के लिए आपको गोल ही स्कोर करने पड़ेंगे, सिंपल एज दैट। उसके लिए आपकी फ्रंट लाइन हैज टू बी क्लिक अप। सेम प्रॉब्लम विद जमशेदपुर एफसी आल्सो। चेन्नई एफसी ने अपना पहला विन कर लिया है, सो दिस लुक्स वेरी नाउ लेट्स सी इफ दे कंटिन्यू दिस दैट मोमेंटम, वो देखना इंटरेस्टिंग सा होगा। उसके अलावा यहाँ पे ईस्ट बंगाल परफॉर्मिंग डिसेंट वेरी गुड। आई थिंक उनका भी आई थिंक एक टीम टू वॉच आउट फॉर रहेगी कि जो मतलब Yeah, yeah, कार्लोस की तरह अच्छा करती आ रही है। सो लेट्स सी। yeah. It's going to be interesting. Again, before we wrap this short conversation up, Anwar Ali. Any update on Anwar Ali because there is a lot of concern around him. I think the news is coming up is that he might be out till the December. So let's hope Yeah, so. He will be available in the Asian Cup. I think he's definitely out from World Cup qualifiers. It's 100% sure now. So let's yeah. wait for the official statement, which is still not come from the club side. So that's a surprising thing because generally in 1 or 2 days there is a official statement from the club side, but still there is no any update regarding that. But the news is coming up that he might be out until the December. What sort of impact do you think that creates for Indian It's the a Indian one? Yeah, it's a major setback for the major Indian loss. cricket Yeah, I agree. in the World Cup। हाँ बिल्कुल, we don't have any ready replacement. That's the आप you have a Lalit Chuga, Mehtab and Sana, but I don't see them as a same as quality as Anwar Ali. So that's a compromise thing. Uh, and let's hope कि वो अच्छा कर ले। That's the only क्या बोलते कि चीज हम क्या बोलते एक्सपेक्ट या फिर उनसे उम्मीद रख सकते हैं। अगर if Anwar Ali was there, then there is a surety कि he will perform well. So I agree. that's the difference he make। And again, the second one is Jeekson, like Lord Becky is pointing out. What does it look like? Any idea?
Jackson again same cheese. There is no official you can say update from the club side ki whether he is doing surgery or not. Both the coaches, assistant coach and their main coach Ivan Vukonovic has confirmed that he need a surgery, but there is a no official update when he will going to do surgery or anything. So there is a suspense also in that case. So, but I think he should be out in the, he most probably out from this World Cup qualifier. So that's Does also that big mean, setback. does that kind of tell us that we need Apuya right now? We need, I think, 100%, but I don't see him, to be honest. He was doing will call of him. So that's Yeah, the thing. yeah, Otherwise, though, there is a no-brainer. He should be in the squad. If Jackson yeah, was there also, then also Apiya yeah, should be 100%. on the squad. But अगर अब Jackson है नहीं तो then तो definitely you have to hold up Apiya. Yeah, I completely agree. I completely agree. Okay, guys. Um, Fortunately, like this today, we've had a kind of short conversation wrapped up. Kerala Blasters versus Odisha. Kerala coming out with a dramatic 2-1 win. Of course, in front of their impressive home crowd. Then we've got another game tomorrow coming up, which is Mumbai City, Hyderabad. The couple of I-League games, Real Kashmir, Rajasthan FC, Gokulam, Kerala, Interkashi. So there's a lot of football to look forward to tomorrow. If you're a European football fan, of course, there's a lot. The Premier League's back there. Classicos around the corner. You've got the Manchester Derby. It's a good football weekend. I'm sure everybody's looking forward to this weekend. It's gonna be fun. Thanks, Irene, for joining. And we'll be back tomorrow. Good night. Okay, guys. Good night.